Good morning students, today once again welcome back and we are going to start all the questions. We are going to solve all the questions of the chapter The Tale of Bishnois. हम chapter start करते हैं. Who was the mother of Jambaji? Hamsa Devi, Ramsa Devi, Amrita Devi और Kaushalya Devi? The right answer is Hamsa Devi and his father's name was Thakur Lohar Singh and he was the headman of the village Pipasar. Second, what was the age of Jambaji when the great disaster overtook the Marwad? जब मारवाड़ पर बड़ी मुसीबत आई, भयंकर विपत्ति आई, नेचुरल कैलेमिटी आई, तो जाम्बाजी की एज क्या थी? 23, 25, 35 और 21? The right answer is 25. C option is right. Third question, how many Bishnois sacrificed their life? Everyone knows 363. The right answer is B. Now section C पे आ जाइए आप. First question, what kind of trees and animals were found in the desert of Marwad? मारवाड़ के रेगिस्तान में किस तरह के पेड़ और जानवर पाए जाते थे? एनिमल्स. योर आंसर विल बी the trees and the animals which were found in the Marwad were khejdi, bear, sangri, and the animals like black bucks, stags, antelopes. Okay, I am repeating once again. The trees which were found in Marwad, desert of Marwad were khejdi trees, and next sangri, bear and kher, and the animals which were found were antelopes, black bucks, chinkara, nilgai, etc. Second question, who were the original residents of Marwad? मारवाड़ के जो वास्तविक निवासी कौन थे? Your answer will be tribal Bhils. Tribal Bhils were the original residents of Marwad. Third question, how was the vegetation of Marwad affected? मारवाड़ की जो वेजिटेशन थी, वनस्पति थी, वो किस तरह से प्रभावित हो गई? तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ herds or we can say cattle, all the vegetations or we can say saplings or seedlings, they were grazed down. छोटे छोटे पेड़ पौधों को चर लिया गया and there was little chance to grow up. उनके बड़े होने का कोई चांस नहीं था. It means the land also lost its fertility. जमीन ने भी अपना उपजाऊपन खो दिया. जो seedlings थे, जो saplings थे, they were grazed down, उन्हें चर लिया गया by the wild animals as they started affecting the vegetations of Marwad because of desert. किसकी वजह से? रेगिस्तान की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं. यहाँ पर है फोर्थ क्वेश्चन, हु कॉन्कर्ड द Bhils फाइनली एंड बिकेम द रूल ऑफ मारवाड़? Bhils को लास्ट में किसने जीता? द आंसर विद द राठौड़ ऑफ कन्नौज. द राठौड्स ऑफ कन्नौज फाइनली कॉन्कर्ड द Bhils एंड बिकम द रूलर ऑफ मारवाड़. राठौड़ ऑफ कन्नौज. राठौड़ ऑफ कन्नौज. What were the names of the parents of Jambaji? Jambaji's father's name was Thakur Lohar Singh and mother was Hamsa Devi. Sixth question, what was the most fascinating and enthralling thing for Jambaji? सबसे अधिक आकर्षक, मनोहर, ध्यान को आकर्षित करने वाली चीज जाम्बाजी के लिए क्या थी? Your answer will be the sight of fighting. The sight means दृश्य. The sight of fighting between two full-grown stags was enthralling and fascinating for Jambaji. And one more thing you can write here also. And the lithe grace of antelopes. What is lithe? Lithe means beautiful grace. यानी कि जो movement है, the beautiful movement of the antelopes and the fighting between two fully grown stags. दो जो 12 सिंगों के बीच जो लड़ाई थी, it was more fascinating and enthralling for Jambaji. Question number 7. What were the two major commandments of Jambaji's message? Jambaji के दो आदेश, orders, आज्ञाएं क्या थी? Number 1, prohibition of cutting any green trees and killing any innocent animal near their vicinity. Vicinity means area. 8. Why were the Bishnois called by this name? Most important question है board exam के लिए कि बिश्नोइयों को इस नाम से क्यों बुलाया गया? Your answer will be the Bishnois were called with this name because they adhered means followed 29 precepts or tenets given by Jambaji. I told you 29. Bishnoi 20 plus 9. This is bis and this is noi. Bishnoi 29. They adhered, उन्होंने follow किया. They adhered, it means followed. FOLLOWED.
precepts or tenets and सिद्धांत morals principles given by जाम्बाजी, क्योंकि जाम्बाजी के द्वारा दिए गए 29 tenets को follow किया. That's why they were known as Vishnoi. These plus Vishnoi. Next question here. 1 minute. Okay. What is the use of lime kilns? Lime kilns का यूज क्या होता है? Lime kilns are used to cure the limestones. उसको लाइम स्टोन्स को पकाने के लिए लाइम kilns मीन्स फर्नेस यानी चूने की भट्टियों का उपयोग किया. इट नीड्स अ ग्रेट फ्यूल, इससे काफ़ी ईंधन की जरूरत पड़ती है. एंड आफ्टर क्योरिंग, और जब लाइमस्टोन क्योर हो जाता है, इट बिकम्स अ प्योर लाइम, बिकॉज प्योर लाइम, वो प्योर चूना बन जाता है. एंड दैट इज यूज इन कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग और अ पैलेस, जो बिल्डिंग या पैलेस बनाने के काम में आता है. हियर यू कैन सी व्हाट लाइम kilns. Lime kilns. What is the meaning of kilns? Furnace. FURNACE यानी भट्टियाँ, जैसे ईंटों के भट्टे होते हैं ना, गर्म भट्टे, ईंटें पकाई जाती है उस तरह से. तो लाइम किल्स में क्या होता है, जो लाइम स्टोन होता है चूने का पत्थर, उसे क्योर किया जाता है, उसे पकाया जाता है, और पकने के बाद वो प्योर चूने बदल जाता है. तो वो किस काम आता है? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के, पैलेस के, या किसी घर के कंस्ट्रक्शन के काम में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Diwan send his men to Khejadali? Diwan sent his men to Khejadali to cut down the green trees, to cut down the trees, because it needed a great fuel for the cure of limestone. And Khejadali was only one village where there was enough fuel. Next question. What promise did Abhay Singh make to Bishnois? Abhay Singh gave a copper plate to the Bishnois. It was inscribed, उस पर उत्कीर्ण था, लिखा हुआ था, दैट henceforth कि आज के बाद no green tree would be cut down near their vicinity or vicinity means area, and no innocent animal would be killed. And last question, what was written on the inscriptions presented? inscription of उत्कीर्ण, जो बिश्नोइयों को एक कॉपर प्लेट दिया गया था, उस पर क्या इंस्क्राइब था, क्या लिखा हुआ था? इंस्क्रिप्शंस, क्या उत्कीर्ण था उस पर कि नो ग्रीन ट्री वुड बी कट डाउन नियर द टेरिटरी एरिया एंड नो इनोसेंट एनिमल वुड बी किल्ड. इट वाज रिटन. स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग क्वेश्चन डी सेक्शंस यू विल डू योरसेल्फ, आप खुद करेंगे. इतना हार्ड चैप्टर नहीं है और इसके क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस. अब जैसे क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज द डिजास्टर मारवाड़ फेस विद जाम्बाजी वाज 25 years. द मारवाड़ फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्राट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? आपको पता होना चाहिए 5 years, 6 or 8 years. For 8 consecutive 8 years there was drought. नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाउ डिड द बिश्नोइज फेस दिस प्रॉब्लम? बिश्नोइयों ने इस प्रॉब्लम को फेस कैसे किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में. Next, how did Jambaji's teaching affect the villagers? Jambaji's teaching motivated the villagers. They started protecting the wild animals and planting more and more trees. They wanted that if they want the earth to be covered with green trees, once again they will have to do something different. They will have to come with positive state of mind. Why did Bishnois sacrifice their life? Bishnois sacrificed their life to save their sacred heritage. Sacred means, what is the meaning of sacred? SACRED. Sacred means holy. Holy means pavitra. Sacred singular is holy. Third is pure. And fourth is pious. PIOUS. इन सब का मतलब पवित्र है. Students, जो remaining questions हैं, you will do yourself, आप खुद करेंगे. And tomorrow we will start the next chapter. Till then, thank you.